In a brand new political controversy, Rahul Gandhi has accused the Prime Minister of lying about his caste, claiming that he is not an OBC at all. I'm Barkha Dutt, you're with the Mojo story. Just a couple of days after the Prime Minister self-referenced his caste as a member of the OBC community while speaking in Parliament, his last speech in Parliament before the elections of 2024, a new controversy has erupted. Rahul Gandhi, the Congress leader, has claimed that Prime Minister actually belongs to what he called a general caste. He accused the Prime Minister of falsifying his OBC status much after the fact. The BJP has hit back, saying that the Congress is basically uttering a blatant lie. In fact, the BJP's Amit Malviya took to Twitter, now known as X, to release documentation that shows exactly when the Prime Minister registered himself as someone belonging to the OBC status. With this personal attack on the Prime Minister, comments in which Rahul Gandhi also took a swipe at the clothes and the suits and what he called the expensive clothes of the Prime Minister, has Mr. Gandhi scored another self-goal. Remember, each time that the Prime Minister has actually attacked the Prime Minister, Rahul Gandhi has attacked the Prime Minister personally, it has rebounded on the Congress. But this is among the gravest allegations that has come from Rahul Gandhi, who has been trying hard to co-opt caste politics as a counter to Hindutva. To talk about what might be the impact of these statements and this latest political controversy, let's introduce our guests on the program today. If we can bring them up, we have Ashwini Shahi, senior leader of the BJP with us, and we have Ikram Singh Sandhu, leader and spokesperson of the Congress party. Before we get started, I want to play for you how the Prime Minister spoke about his OBC status in Parliament. He basically said opposition keeps going on about caste politics, the rights of the OBC. They don't recognize that. Here I am standing, an OBC Prime Minister. Listen in. सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जरा मैं ये दुनिया भर की चीजें करते हैं, मैं कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री कहते हैं उनको जात दिखता नहीं है, ओबीसी जात ये क्लास है, ये यूपीए के समय एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई थी, जिसके सामने सरकार की कुछ नहीं चलती थी। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जरा कोई निकाल करके देखे उसमें क्या कोई ओबीसी था क्या? जरा निकाल के देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पावरफुल बॉडी बनाई थी और वो अपॉइंट कर रहे थे। In response to these comments by the Prime Minister, Rahul Gandhi stoked a fresh controversy, claiming that the Prime Minister is not a member of the OBC community at all. Take a look. और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं 1 सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोर घांची जात के हैं, मोर घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। Now, the BJP has since released documents on social media that show that Mr. Gandhi's claim that
the Prime Minister only got himself registered as an OBC was after he became the Chief Minister of Gujarat is false, releasing documents that show that this took place in 1999. But more to the point, what is Mr. Gandhi hoping to achieve by questioning the caste status of the Prime Minister? Ashwini ji, आपसे शुरू करती हूँ. राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से झूठ बोला है. वो तो ओबीसी कम्युनिटी के हैं ही नहीं. आपने भी सुना होगा उनका बयान. आप क्या कहेंगे? बरखा जी, देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से अपनी बातों को कहते हैं, और हम लोग बार बार कहते हैं, आपके यहाँ भी कई बार हमने कहा कि राहुल गांधी जी का बचपना अभी गया नहीं है. राहुल गांधी जी तथ्यों से परे हैं. राहुल गांधी जी अपने दल के लोगों से सलाह मशवरा नहीं करते हैं, कुछ भी कहीं बोल जाते हैं. उनका कोई, इसीलिए ना उनकी पार्टी, ना उनके लोग, ना देश के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं. ये मुद्दा कई बार उठा, 2014 के चुनाव में उठा, 2019 के चुनाव में उठा, शक्ति सिंह गोहिल ने उठाया इस चुनाव, एक बार जवाब भी दिया गया. छबील दास मेहता मुख्यमंत्री थे 1994 में, वो कांग्रेस के थे, और 25 जुलाई को 94 को 36 जातियों को इन्होंने ओबीसी का दर्जा दिया था, जिसमें घांझी और मोड़ जातियां थी. उसमें 25B जो अधिसूचना जारी हुई है उसका मैं 25B मेरे पास नोटेड है, आप मंगाकर आप देख लीजिएगा. 25B में उल्लेखित है मोड़ और घांची जाति. तो भाई अब 2002 में तो उन्होंने किया नहीं, 94 में हमारी सरकार नहीं थी. तो राहुल गांधी जी को सत्यता जानना चाहिए. और ये गोहिल साहब के जवाब में वहां की गुजरात की सरकार, उस समय के प्रवक्ता और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल साहब सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं इस चीज को. लेकिन राहुल गांधी जी को सच्चाई से तो कोई मतलब नहीं है. इस और वो क्यों मतलब नहीं है, सच्चाई से क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि इनको माननीय मोदी जी पर पर्सनल अटैक करना है. इनके ऊपर करते हैं तो कांग्रेस लोगों को हो जाता है. अब ये फिरोज के पोते हैं, अब अपने को तो दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में. पुष्कर मंदिर में आते हैं तो कश्यप गोत्र हो जाता है. जम्मू कहते पहुंचते हैं तो मैं ही हिंदू हूं. भाई कब इनकी जाति बदली, कब इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बताएं. हिंदुस्तान में पितृ सत्ता है. अगर इनके फिरोज पारसी थे, इंदिरा जी हिंदू थी, तो पारसी हुए राजीव गांधी जी. ईसाई से शादी हुई सोनिया जी के, तो ये ईसाई और पारसी के पुत्र क्या हुए, तो पारसी ही हुए. तो राहुल गांधी जी अपने को पारसी करने में शर्म क्यों करते हैं? अच्छी बात है हिंदू बोले, मैं अच्छा है, लेकिन कम से कम ये तो कहें कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया. सबके सामने कहें धर्म परिवर्तन नहीं, मुझे समझ नहीं ना 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 आप नहीं समझी नहीं हमारी बात. अप टू अ पॉइंट तो मैं समझ रही थी, उसके बाद आपने धर्म परिवर्तन की बात करके मुझे कंफ्यूज कर दिया. जी, मैंने वही कहा कि जब ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में कि मैं ही शुद्ध हिंदू हूं, मैं सबसे जरा खाटी हिंदू हूं, तो मुझे ये जानना है कि ये धर्म परिवर्तन इनका कब हुआ. ये पारसी से दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण कब हुए? कोई एक वो हुआ होगा, समायोजन हुआ होगा, कहीं कहीं इनके धर्म परिवर्तन कराया गया होगा, कोई आयोजन होगा, तो कहीं तो वो तो पता नहीं है किसी को. तो जब ये व्यक्ति पारसी होकर और हिंदू होने का दावा करता है, और सच्चाई से परे जो साक्ष्य है अधिसूचना में है, उसको कहते हैं कि नहीं ये 2000 के बाद इन्होंने कर लिया अपने आप को. तो ये मोदी जी पर पर्सनल अटैक है, जिससे इन लोगों को बचना चाहिए. जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक बच्चे का धर्म, ये जनरल बात कर रही हूँ, राहुल गांधी की बात नहीं कर रही, सिर्फ उनके फादर से नहीं, उनकी माँ से भी आता है. लेकिन दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ. द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन राइट नाउ इज व्हाट मिस्टर गांधी हैज सेड. आपने कहा ये एक पर्सनल अटैक है, फिर पर्सनली टारगेट किया गया है. इकरम जी आपसे पूछूंगी, लेट मी आस्क यू, एवरी टाइम मिस्टर गांधी हैज टारगेटेड द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली, इट इज रीबाउंडेड, इट इज बूमरैंग्ड ऑन द कांग्रेस. जब उन्होंने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू मीट द क्रिकेटर्स इन द ड्रेसिंग रूम, I mean, what good did it do your party in the assembly elections? What is the purpose of raking this controversy, which, as Ashwini Shahi says, has been raised several times before and has never yielded any results? Why do this? Good evening to all. Barkha ji, you are a very seasoned politician. And one comment doesn't... Sorry. Political commentator. I forgot the commentator thing. So, one comment doesn't make or break anybody, and it doesn't make or break even an election. So it is just this, bigger than usual, cacophony that surrounds Mr. Modi, that,
basically instill fear in the minds of the opposition that you cannot even criticize the prime minister, because if So you you can criticize him, criticize, but why are you questioning his caste? Why are you? no, we are You are not. Look, you are commenting on his clothes. You are saying कि वो कपड़े जो पहनते हैं वो तो अमीर लोग ही पहन सकते हैं. You are commenting on his Barkha ji, please caste. don't interrupt me. You gave him Okay, 5 minutes sorry. where he Please go like ahead. Please go ahead. Please I go ahead. really don't know the caste structure Go too ahead. well, and he told me Gotras and this Brahman and that. So give me at least Okay. half the time, you know. Go So ahead. what Go I'm ahead. saying is the gold standard on being abusive to people is actually our prime minister. A person who can call a widow Congress ki vidwa, somebody who can call a mother a Jersey cow, somebody who can call somebody's legally wedded wife as a 50 crore ki girlfriend wife / whatever. So, you know, somebody like that expecting that nobody else should say anything to him is being very rich and very profound in a very perverse manner. That I can say what I want to say to anybody, but when it comes to me, nobody can say something because फिर मर्यादा पार हो जाती है. And what has Rahul ji said? I take what my friend from the BJP is saying, that it was Chiman Bhai Patel's government in 1994 which came out with the Gazette. We believe it happened in 99, 2000. Let us say, was Mr. Modi born after 1994? He was born in September 1950, that I know. So what has Rahul ji said? That he's not born an OBC. So whether that caste became an OBC caste when he was 44-year-old, or that caste became an OBC caste in Gujarat when he was 50-year-old, what is wrong that Rahul Gandhi has said? You know, you just make a mountain out of a molehill. He has abused Mr. Modi. How has he abused Mr. Modi? He has just said he is not an OBC by birth. And he's not an OBC by birth, even if you take the 1994 timelines. It is very, very clear. He wasn't born in 1995. So it is just something which is created to create this But you're aura about saying Mr. Modi. so you're saying in the 1990s, Mr. Modi had the foresight to know that he should change his his caste identity because one day it might be useful for him to play a hand of politics in 2024. Ikram, what is the argument that you're making? We are just saying that Ghanchis were not backward in 1950 when he was born. So Mr. Modi was not born an OBC. Plain and simple as that. If it happened in 1994, it happened in 1999, or it happened in 2000 is a different thing. Mr. Gandhi did not say that Mr. Modi does not come from an OBC caste as of today, the listing that we are doing. But he was not born an OBC is something which is very simple to understand, because he was not born an OBC since in 1950 the caste that he belongs to was not an OBC caste. Okay. I'll let Ashwini Shahi respond to this, but after that I want to ask both of you whether this will make any difference to the perception of the voter. But go ahead, Ashwini ji. जी देखिए बरखा जी, आपने अभी कहा कि ये राहुल गांधी जी का मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे मित्र ने अभी कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा कि वो 94 के पहले, चलिए अच्छी बात है, मैं कहता हूं 2000 में नहीं हुए, आपने कहा कि 94 के पहले वो ओबीसी नहीं थे, वो जनरल थे, यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। और आपने कहा बरखा जी कि मातृसत्ता भी होती है, चलिए मैं मान लेता हूं, तो सोनिया जी की मातृसत्ता से ही गिन लीजिए तो ईसाई हुए, राहुल जी की मातृसत्ता से गिन लीजिए तो वो जो है क्या हुए, पारसी हुए, पितृसत्ता उधर ले आइए, कहीं ले, ये वर्णशंकर कहा जाता है हिंदुस्तान में इसको, मैं जहां तक जानता हूं। तो अगर हम लोग राहुल गांधी जी को कैसे कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, कैसे कहते हैं बताइए जरा, मैं वही जानना चाहता था जो आपने कहा कि आपने कैसे कहा। यही बात, राहुल गांधी जी क्या पैदा हुए थे, जाति की बात कोई दिक्कत नहीं, जब आदमी पहले जातियां नहीं थी, अगर कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो धरती पर कोई जाति नहीं होती है, वो हम आप बताते हैं अपने बच्चों को कि तुम इस जाति के हो, समाज बताता है। आज सार्वजनिक रूप से ये कहने की क्या जरूरत है, बेवकूफ बना रहे हैं। ओबीसी अगर आज हैं तो आज वो जो है वो हैं। राहुल गांधी जी आज हम कहते हैं कि हिंदू हैं तो राहुल गांधी हिंदू है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वो शिव मंदिर में भले ही शिवलिंग पर उनको दूध चढ़ाना नहीं आता हो, वो बाहर चढ़ाते हो उसके, वो अलग बात है, लेकिन हम उनको मानते हैं, चलिए हमको गर्व है, अच्छा है, एक हिंदू हमारा बढ़ा, अच्छी बात है। क्या जरूरत है कहने की उनको, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की खींच है। कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है, कांग्रेस के पास ना आज मुद्दा है, तथ्यों का अकाल है, कांग्रेस के पास तर्कों का अभाव है, कांग्रेस के पास जो है इस समय शब्दों का सूखापन है, तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, तो क्यों ना मोदी जी के ही खिलाफ बोला जाए, क्या घट जाएगा। अगर वो जिस दिन राहुल गांधी जी ने आज कहा
देखिए कल से उन्होंने 1.5 लाख 2 लाख वोट बढ़ा दिया मोदी जी के नाम पर। राहुल गांधी जी जीरो होते चले जा रहे हैं। ये ओबीसी माननीय मोदी जी को गाली देने पर हर बार कांग्रेस घटती चली जा रही है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस 24 में 24, ममता जी ने 40 कह दिया, बहुत ज्यादा है। कांग्रेस अपने आप की आत्म समीक्षा करे। कांग्रेस को मोदी जी से और राहुल गांधी जी को तो खास करके मोदी जी से लड़ने की स्थिति नहीं है। टी शर्ट बेचने की नौबत आ गई है, जींस बेचने की नौबत आ गई है। स्थितियां बड़ी भयावह हैं। देश की जनता ने तय कर लिया है कि कहां जाना है, किधर जाना है। वो ए, झंडे ए, बता रहे हैं कि सनातनियों ने तय कर लिया है कहां जाना है। तो राहुल गांधी जी को ये कहने से मोदी जी पर फर्क नहीं पड़ता है, बाकी उनके ऊपर फर्क पड़े वो जो भी हो। जी इकरम, ये अश्विनी शाही का एक वैलिड क्वेश्चन है दैट इफ नोबडी क्वेश्चंस मिस्टर गांधी फॉर आइडेंटिफाइंग एज अ हिंदू, व्हिच ही क्लियरली डज, nobody says that, oh, your lineage is mixed. You identify as a Hindu, you identify as Hindu. लोग उनसे ये तो नहीं कहते कि आप प्रूफ दीजिए। तो आज आप you're arguing on a technicality, but you're calling the prime minister a liar. You're not making a technical argument. You're actually personally calling the prime minister a liar. These are two very different things. Please go ahead and react. Barkha ji, what is the crux of the whole discussion that we are having in this discussion? Mr. Rahul Gandhi has come up with the point that OBCs need reservation. They belong to the bottom of the pyramid and something has to be done from that. To deflect that, Mr. Modi always says that just because I am an OBC and I have reached this position, nothing needs to be done for OBCs. As if he embodies everything that the OBC community, the OBC class aspires for. That is what we are against. You cannot make it personal that just because I have reached a position today and I belong to a certain caste which became an OBC. Yeah. I can't hear Ikram. Can we just unmute him? Yeah. Sorry, Ikram. Just complete your point. Now, can you hear me? Yeah. So the whole thing comes from that. What is Rahul Gandhi ji aspiring for? He is aspiring for that today. And even we have been in power. We have been in power for 50, 55 years. Now, BJP has been in power for 16 years if you count Vajpayee's time and Mr. Modi's time. And you have to improve. OBCs, scheduled caste, scheduled tribes, Muslims, all of them come at the bottom of the pyramid. And we have to do something to take them up, whatever might be the repercussions for that. Talking about Muslims, they always said that Mr. Manmohan Singh said that the first right for the resources of the country is on Muslims. He never said only Muslims. He said scheduled caste, scheduled tribes, and Muslims. Today, their own data says that in Uttar Pradesh, 37% of all Ujjwala connections go to Muslims. Their population is 19%. Now, are they doing Muslim appeasement? Why are they giving double the share to Muslims? We never say that. That is required. If somebody is at the bottom of the pyramid, he will get more than what his population demands. So similar thing is required for OBCs. We are taking care of scheduled caste. We are taking care of scheduled tribes. We are taking care of Muslims. But what about OBC? In certain states, the OBC population is as high as 30 to 35%. Their population in the civil services there is at abysmal 2% or 3%. So that is what the real point is, rather than discussing kiski mother ka kya religion hai, father ka kya religion hai, do you take your father's religion, do you take your mother's religion? This is in 2024, if we are talking about this, that is what we are saying. BJP will take India back to the Stone Ages, and that is where we will languish if BJP comes to power again. Ashwini Shahi, putting aside what you both personally think about each other's parties, ये जो कांग्रेस कहती है कि भैया आप ओबीसीज के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कास्ट सेंसस की बात करिए, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब ये नहीं हो सकता that the prime minister is an OBC, so we don't have to talk about a caste census. इसमें मैं लास्ट कमेंट आपको देती हूँ अश्विनी जी। जी देखिए, अभी आपने कहा अकरम साहब ने कि दो बातें कही, इसके बाद मैं आपके बात का जवाब देता हूं। आपने कहा कि कौन क्या है क्या नहीं है, और 2024 में हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। शुरू किसने किया था? राहुल गांधी जी ने शुरू किया इस चीज को। हमें नहीं करना चाहिए, तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा यूपी में 19% मुस्लिम है, 37% दे दिया गया। यही नेगेटिव नैरेटिव फैलाना कांग्रेस का काम है। उज्ज्वला योजना का कनेक्शन का 37% दिया गया, वो उनकी पॉपुलेशन का 37% नहीं दिया गया। ये आप सोचिए। नहीं, आप कह रहे हैं 19% है, 37% उज्ज्वला में 37% कनेक्शन। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपको तारीफ भी पसंद नहीं है। सर रुक जाइए, नहीं सर रुक जाइए 1 मिनट।
अभी अगर उज्ज्वला हमने 1 लाख बांटा तो 1 लाख में 37,000 हमने मुस्लिम्स को दिए। हमारा कहने का मतलब ये है फॉर अ पॉपुलेशन व्हिच इज 19 आपने 37 दिया, बहुत अच्छा किया। 37%। ठीक, और दूसरी बात, अब मैं आता हूं, कर रहे हो आपने किसी और का हक नहीं, हम सबका साथ। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो इस पर ओबीसी पॉलिटिक्स पर जो बात हो रही है। देखिए बरखा जी, यहां पर भी कांग्रेस जो है अपने झूठ में पकड़ी जाती है। जो राहुल गांधी जी ने कहा कि वो बेवकूफ बना रहे हैं, तो मैं उस शब्दों का प्रयोग करूं कि राहुल जी बेवकूफ बना रहे हैं धरती के यहां हिंदुस्तान के लोगों को, तो एकदम चिपक जाता है उनके ऊपर। वो क्यों? 2011 में कास्ट सेंसस हुआ था, उसको 2014 तक सरकार थी कि इन लोगों ने उसको घोषित नहीं किया। पहली फॉल्ट क्यों नहीं घोषित किया? 4 साल का टाइम था, अगर आप इतने ही तेजी से तो कर देना चाहिए था। उसके बाद राजस्थान में आपने कराया, सिद्धारमैया जी की सरकार थी, कर्नाटक में कराया, आपकी सरकार है, आप नहीं कर, आप जगह जगह जा रहे हैं और कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है। आपके मुख्यमंत्री जिसने वो कास्ट सेंसस कराया था 150 करोड़ रुपए देकर, वो आज घोषित नहीं कर रहे हैं। और उसका कारण उसके पीछे का क्या है? डीके शिव कुमार जी कोर्ट चले गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस क्या सही कह रही है? राहुल जी सही कह रहे हैं, डीके शिव कुमार सही कह रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी सेंसस कराना चाहती है या सिर्फ जो है ये जुमला बोल रही है? क्या है ये बातें? जनता के ऊपर छोड़ता हूं मैं आपके शो के माध्यम से। ओके, 30 seconds each to both of you, Ikram and then Ashwini Shahi. Ikram ji, बोलिए। Barkha ji, the only thing I have to say here is, let us not make everything personal. That is what Mr. Modi does. If there is a problem in the country, it is our responsibility. Anybody might be in the ruling party, anybody might be in the opposition, to find a solution how to resolve that issue. Not to make it personal and make it something so fluid and shallow that just because I belong to a certain caste, everything is hunky-dory with that caste. No, it is not that. That class is oppressed and we all have to take action, and whatever it might be. And you are right, my friend from BJP, in 2012 the report came out, the survey started in 2011, and I am first to agree. We are the only party which agrees that yes, we should have released it in 2012, but at that time the internal thinking was, because the elections were only 18 months away, let 2014 happen and then we will release it. That report was never released after that. Yes, we did not release it, and I on your channel can say that we should have released it. But now if you have anything to do with OBCs and you want to do something good for them, please have a new survey and let us see what best we can do for them. Whoever might come in power in 2024, the citizens of this country deserve a platform where they can do better in the future. भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी कमीशन बनाया, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, वो उसी के हिसाब से हमने किया, क्योंकि हमने देखा ओबीसी में 2633 जातियां हैं बरखा जी। 2633 जातियों में 97%, 97% को उसका लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ 3% लोगों को लाभ मिलता है। उसमें लगभग 1700 ऐसी जातियां हैं जिसको कुछ नहीं मिलता है ओबीसी का कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। हमारे पास सारी कैटेगरी है उसकी। हम लोगों ने इस पर, क्योंकि आपके साथ बैठना पड़ता है तो हम लोगों को देखना पड़ता है उस पर, तो हम रोहिणी कमीशन के हिसाब से जो जिसको होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का हमारा नारा है। इसलिए हम उसके हिसाब से 2633 जातियां जो ओबीसी में आती हैं, हम सबको बराबर का वो विसंगति दूर करेंगे, और उसको दूर करने के बाद हम वो कास्ट सेंसस को जरूर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार ने कहीं इसको मना नहीं किया है। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आज मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ है या उसको सौंप दी गई है शायद, तो वो जैसे ही आती है हम लोग कोशिश करेंगे कि वो कास्ट सेंसस उसी के हिसाब से हो। जी, अब देखना यही होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी में कोई बदलाव आता है या नहीं। राहुल गांधी is also set the cat among the pigeons by saying that he does not support a 50% cap on reservations. लेकिन that subject for another day. Thank you so much Ashwini Shahi and Ikram Sandhu for talking to us. Namaskar, take care, and to our audience, see you tomorrow. Mojo Story has always made a commitment to its viewers to go to where the story is. And as you can see here, we are at the epicenter of the Israel war on Gaza. We are right at the front line, about 1 mile from the Gaza Strip, as the Israeli military gets ready with its tanks and its gunners to begin its final frontal assault that will take troops into Gaza. As we said, we are not like other organizations. We believe in giving you all sides of the story objectively and as much as possible from the ground. And that's exactly what we're doing here, covering the biggest global story today from the epicenter of the war zone. So please, we need your support
Support us, become a Mojo member, subscribe to us, spread the word, and thank you for your support.